Hey, so no plans at open. Have marked a couple of lines here, 18,700 to 18,600, based on previous price action. For tomorrow, I'll probably wait and see if I get a closing below 18,600 levels, near to 18,600 levels. Keeping today's high as stop loss, I'll look for selling opportunities. Yep. Bank Nifty gave some good volumes in the morning. Frankly was looking to break this low of this first candle which initiated this volume, is taken out before 10:30. So if you're watching my post market lately, Bank Nifty has not given good volumes, so you probably have to go back if you want to see how this trade works. I've shared this several times. So usually if by 10:30, if this low breaks and day low is not broken, and by 12 candle is around VWAP or is below VWAP, a good buying opportunity can be initiated or taken. So did not take this trade because this low was not broken and did not really want to sell. Nifty did not trade, did trade my system trade, stop loss got hit, so a red day for me. Nothing more to add here. The stop loss was 15 point stop loss. Trade was if 1 o'clock is basically closing below VWAP, I'll look for a sell. Stop loss 1 o'clock high. Stop loss got hit, but it was mostly sideways after that. Tomorrow, as I mentioned, if I see a candle closing near to these levels, 18,600 levels, I'll look for a sell. Otherwise, because my stop loss will be today's high, otherwise I wouldn't be interested. थैंक यू. तो जैसे मैंने फ्राइडे को बोला था, मैं वेट करके देखूंगा. मैंने 2 रेंज ऐड किए हैं इसमें, 18,700 टू 18,600 प्रीवियस प्राइस एक्शन देख के. तो अब कल का ट्रेड मैं देखूंगा. अगर कोई बनार क्लोज मुझे मिलता है 18,600 लेवल्स के आसपास, तो मैं आज का डे हाई रख के स्टॉप लॉस रख के उसको सेल करूंगा. बैंक निफ्टी में अगर आपने मेरे पोस्ट मार्केट पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने एक ट्रेडिंग पैटर्न है जिसमें अगर अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं और इस कैंडल का लो टूटता है 10:30 तक, तो मैं और डे लो नहीं टूटता, तो मैं यूजुअली इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. अगर ये आपके आसपास रहता है या हाई नहीं बना रहा, क्योंकि टारगेट हाई रहता है, पर ऐसा हुआ नहीं, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था. निफ्टी में भी इंटरेस्टेड नहीं था. सिस्टम ट्रेड मैंने लिया तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया. स्टॉप लॉस था 15-20 पॉइंट का शायद. हिट होने के बाद मोस्टली वहीं आ गया जहाँ पे था, तो मोस्टली साइडवेज ही रह गया ये सेकंड हाफ. अब जैसे मैंने बोला, कल का ट्रेड मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं उसके लिए वेट करूँगा. अगर वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे तो, नहीं तो मैं ओपन पे ट्रेड नहीं करूँगा. थैंक यू.